श्रीगोपालस्तोत्रम्। नारद उवाच नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं। स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं। गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं। हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं। रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः। वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः। यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं। प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं। कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित्। रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं। वसन्तकुसुमामोद सुरभीकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं। सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं। वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं। कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं। नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं। य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं। राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम्। इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री गोपाल स्तोत्रम्। नारद उवाच नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं। स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं। गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं। हेमाङ्गं तुलाकोटि
किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभीकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारदपञ्चरात्रे गोपालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगोपालस्तोत्रम्। नारद उवाच नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमालाविभूषितं गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं
प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभिकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति स वाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गोपाल स्तोत्रम्। नारद उवाच नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभिकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये
स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गोपाल स्तोत्रम्। नारद उवाच नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभीकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः
वेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गोपाल स्तोत्रम्। नारद उवाच नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशी मधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिका चेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभीकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गोपाल स्तोत्रम्। नारद उवाच
नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं स्फुरद्बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चितमूर्धजं कदम्बकुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितं गण्डमण्डलसंसर्गी चलत्कुञ्चितकुन्तलं स्थूलं मुक्ताफलोदार हारोद्योतितवक्षसं हेमाङ्गं तुलाकोटि किरीटोज्ज्वलविग्रहं मन्दमारुतसंक्षोभ चलिताम्बरसञ्चयं रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशीमधुरनिःस्वनैः लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं पुनः पुनः वल्लवीवदनाम्भोज मधुपानमधुव्रतं क्षोभयन्तं मनस्तासां संस्मेरापाङ्गवीक्षणैः यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परं विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतं प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकं योधयन्तं क्वचिद् गोपान् व्याहरन्तं गवां गणं कालिन्दी जलसंसर्गी शीतलानिलसेविते कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित् रत्नभूधरसंलग्न रत्नासनपरिग्रहं कल्पपादपमध्यस्थ हेममण्डपिकागतं वसन्तकुसुमामोद सुरभीकृतदिङ्मुखे गोवर्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकं सभ्यहस्ततलन्यस्त गिरिवर्यातपत्रकं खण्डिताखण्डलोन्मुक्ता मुक्ताहारघनाघनं वेणुवाद्यमहोल्लास कृतहुङ्कारनिःस्वनैः सवत्सैरुन्मुखैः सस्वद् गोकुलैरभिवीक्षितं कृष्णमेवानुगायद्भिस्तच्चेष्टावशवर्तिभिः दण्डपाशोद्यतकरैर्गोपालैरूपशोभितं नारदाद्यैर्मुनिश्रेष्ठैर्वेदवेदाङ्गपारगैः प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परं य एवं चिन्तयेद् देवं भक्त्या संस्तौति मानवः त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितं राजवल्लभतामेति भवेत् सर्वजनप्रियः अचलां श्रियमाप्नोति सवाग्मी जायते ध्रुवम् इति नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोत्रम संपूर्णम। जो साधक इस गोपाल स्तोत्र का पाठ करता है उसको भगवान कृष्ण अपनी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं, अचल संपत्ति, श्री और अपनी कृपा का भागीदार उसको बनाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।